Class 8 Science, Chapter 16 Light, and in this video I will explain the answers of exercise questions. Question number 1. Suppose you are in a dark room. Can you see objects in the room? Can you see objects outside the room? Explain. When we are in a dark room, then we cannot see objects in the room. An object becomes visible when light reaches our eye after being reflected from the object. If there is no light in the room, then the objects inside the room cannot reflect any light. Hence, we cannot see in a dark room. We can see the objects outside the room because out of the room the light is available and the rays of light can enter our eyes after reflection from the objects. Now, question 2. Differentiate between regular and diffuse reflection. Does diffuse reflection mean the failure of the laws of reflection? Make two columns, one side regular reflection, another side diffuse reflection. In case of regular reflection, all the reflected rays are parallel, while in diffuse, the reflected rays are not parallel. In regular reflection, it occurs on a smooth and polished surface, while diffuse reflection occurs on the rough surface. In case of regular reflection, reflected rays are in one direction. In case of diffuse reflection, reflected rays are scattered in different directions. Clear? Now, answer of second part, that does a diffuse reflection mean the failure of the laws of reflection? Our answer is no. Diffuse reflection doesn't mean the failure of laws of reflection. It is caused by the irregularities in the reflecting surface. Now, question number 3. Mention against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. First one is polished wooden table. Regular reflection will take place. Reason? Because the surface is plain and polished. In case of chalk powder, diffuse reflection because the surface is rough. Cardboard surface, again diffuse reflection because the surface is rough. Marble floor with water spread over it, regular reflection because the surface is plain and smooth. Mirror, regular reflection because the surface is plain and polished. Piece of paper, diffuse reflection because of surface is rough. Question number 4. State the laws of reflection. Laws of reflection are angle of incidence is always equal to the angle of reflection. And second one is the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. Next, question number 5. Describe an activity to show that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. Our answer is, now we have to explain one or we have to describe an activity. Fix sheet of white paper a little beyond the edge of the board. यानी बोर्ड के ऊपर आपको व्हाइट शीट लगानी है जो बोर्ड से थोड़ी बाहर की तरफ निकलती रहे. जैसे ये देखिए, ये व्हाइट शीट आपने बोर्ड पे लगाई और ये थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर की तरफ निकल रहा है. Place a plain mirror strip vertically to the paper using a stand. This is mirror vertically. Throw light from a ray box on the mirror. This is ray box. Okay, ray box means we can use a torch or any source of light, and this light is thrown in such a way that we will get on a single ray. Okay, and this is incident on this mirror. Now look at the reflected ray. Then mark the incident ray, normal ray and a reflected ray like this diagram. Okay, this is incident ray, this is normal and this is reflected ray. Now fold the paper which is beyond the edge of the board. Okay, this जो पेपर हमने लगाया था जो टेबल से बाहर, बोर्ड से बाहर की तरफ था, उसको फोल्ड आपको करना है. Okay, you will observe that the reflected ray is not seen in the folded portion of the chart paper. ये यहाँ पर आपको reflected ray नजर नहीं आएगी. Now bring the folded portion back to its original position.
ये इसको वापस आप खोल दीजिए, इसको आपने फोल्ड किया है. ओके. The reflected ray of light is again seen on the page. अब आपको ये reflected ray यहाँ पर नजर आ रही है. इसका मतलब we can conclude the sheet on the board can be considered as a plane. So the incident ray, the reflected ray, the normal at the point of incidence lie in the same plane. Now question number 6. Fill in the blanks in the following. A person 1 meter in front of a plane mirror seems to be, fill in the blank, meter away from his image. The answer is 2 meter away from his image. Okay. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके पास मिरर आ रहा है. ओके. और 1 person is standing here and this is 1 meter. तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज इस मिरर के पीछे 1 मीटर पीछे बनेगा. तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 मीटर. ओके. इफ यू टच योर, fill in the blank, ear with the right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched. Now मिरर में आपको राइट ईयर टच हो रहा है, इसका मतलब यहां पर आएगा लेफ्ट ईयर. ओके. और यहाँ आप इसको राइट हैंड से टच कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज टच्ड विद द लेफ्ट हैंड. तो आंसर इज लेफ्ट. एक जगह लेफ्ट आएगा, दूसरी जगह लेफ्ट हैंड. The size of the pupil becomes when you see in dim light. Answer is larger. Night birds have lesser cones than rods in their eyes. Now question number 7. Angle of incidence is equal to the angle of a reflection. Options are always, sometimes, under special condition, never. Answer is always. Question number 8. Image formed by a plane mirror is, option are virtual, behind the mirror and enlarged. This is wrong. Enlarged mirror, enlarged image आपको नजर नहीं आता है. Virtual, behind the mirror and of the same size as the object. This is our correct answer. Okay. If you see the another option, real, no. Image is not real from plane mirror. In the same way, D के अंदर भी real आ रहा है. This is not correct answer. Now question number 9. Describe the construction of kaleidoscope. Answer is 3 rectangular mirror strips, each about 15 centimeter long and 4 centimeter wide, are joined to form a prism like this. Now fix this arrangement of mirrors in a circular cardboard tube. The tube is slightly longer than the mirror strips like this. Close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center. ये कार्डबोर्ड डिस्क है, इसको इस वाले पार्ट को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है. Now at the other end, touching the mirrors, fix a circular plain glass plate. ये देखिए दूसरी साइड के अंदर, ये इसके अंदर की तरफ आपने ये सर्कुलर ग्लास प्लेट यहाँ पर रखी है. Now place on this glass plate several small pieces of colored glass, broken pieces of colored bangles. ये छोटे छोटे पीस रखे हुए अंदर की तरफ. Now close this end by the end of the tube by a ground glass plate. ये दूसरी प्लेट से इसको आपको क्लोज कर देना है. Allow enough space for the color pieces to move around. Now your kaleidoscope is ready. Question number 10. Draw a labeled sketch of the human eye. You have to draw this sketch. Okay. This is cornea. This is iris. This is lens. These are the ciliary muscles. This is retina, and this is optic nerve. Next, Gurmeet wanted to perform activity 16.8 using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of the teacher's advice? Answer is, laser light is harmful for the human eyes because its intensity is very high. It can cause damage to the retina and lead to blindness. Hence, it is advisable not to look at a laser beam directly. Now next, explain how you can take care of your eyes. To protect our eyes, the given point should be taken into account.
Visit an eye specialist regularly. Avoid reading in dim light and very bright light. Avoid direct exposure of sunlight to the eye. Clean your eyes with cold water quickly. If dust particles or small insects enter your eye, do not rub your eyes. Maintain a distance of at least 25 centimeter between the book and your eyes while reading. Next, what the angle of incidence of a ray? If the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray. ओके, समझने की कोशिश करिए क्या दिया हुआ है. आपको दिया गया है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है. इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला एंगल दिस इज ऑफ 90 डिग्री. Okay, and as we know from laws of reflection, okay, this is given, angle of I plus angle of R is equal to 90 degree, and as per the laws of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. So we can write angle I is equal to angle R. So we can write angle I plus angle I is 90 degree. So 2 angle I is equal to 90 degree. So angle I is equal to 45 degree. So our answer is angle of incidence is 45 degree. Next question. How many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 centimeter? Mirrors are parallel to each other. Okay. So here mirrors are placed parallel to each other 40 centimeter apart, therefore infinite number of images will be formed. Now next question, question number 15. Two mirrors meet at right angles. A ray of light is incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure 16.19. Draw the reflected ray from the second mirror. ये एक मिरर, दूसरा मिरर, ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री. ओके, और इस मिरर के ऊपर ये रे आ रही है 30 डिग्री के ऊपर. अब ये रे इस पर आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और यहाँ से निकलेगी. हमें इस रिफ्लेक्टेड रे को किस एंगल पे बनाना ये देखना है. ओके, तो जरा देखिए, ये आपके पास 90 डिग्री एंगल है, तो आप कह सकते हैं ये वाला एंगल दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री, because angle of incidence is equal to angle of reflection. और जब ये 30 डिग्री है तो आप कह सकते हैं ये एक पूरा, ये this one and this one, this angle is 90 डिग्री. ओके, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो जब ये 30 का है तो ये कितने का हो गया, दिस इज 60 डिग्री. ओके, और ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो ये फिर एक ट्रायंगल बना आपके पास, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक ट्रायंगल. तो ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो व्हेन दिस इज 60, दिस इज 90, तो आप कह सकते हैं दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री. ओके, और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर एक आप नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो आप कह सकते हैं कि इस नॉर्मल और इसके बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री है. ओके, और इस 90 में से यदि ये 30 है तो आप कह सकेंगे कि ये एंगल आपके पास 60 डिग्री का हो गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, तो आप कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 60 डिग्री. क्लियर? तो ये डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है. तो इफ यू कैन से इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द गिवन रे ऑफ light will reflect from the second mirror at an angle of 60 degree. So you have to draw this diagram. Now next, Bojo stands at A, just on the side of a plane mirror as shown in figure. Like this. ये plane mirror है और Bojo यहाँ side में खड़ा है. Can he see himself in the mirror? Also, can he see the image of objects situated at P, Q and R? आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं कि ये बूजो मिरर से साइड में खड़ा हुआ है. ठीक है, तो बाय द वे मान के चले आप, यदि मिरर यहाँ तक एक्सटेंड होता तो इसका इमेज यहाँ पर बनता, तो ये अपने आप को बिल्कुल नहीं देख सकता. ठीक है, तो आंसर होगा नो, बूजो कैन नॉट सी हिमसेल्फ इन द मिरर. ओके, but he can see the image of the object at P and Q. His
P और Q का इमेज, एक्चुअली यहाँ से रे आपके पास यहाँ जाएगी तो ये इमेज को देख सकता है बुझो, ओके, लेकिन R के इमेज को नहीं देख सकता। क्यों? कि R से जो रेज निकल रही है वो इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगी। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और ये आंसर लिखना है। Now this is the last question. Find out the position of the image of an object situated at A in the plane mirror according to this diagram. Then B part of this question, can Paheli at B see this image? C part, can Bujo at C see this image? And D option, when Paheli moves from B to C, where does the image of A move? Okay, तो A का फर्स्ट का आंसर हमारे पास होगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। देखिए ये इसके बिल्कुल मिरर के बिहाइंड बनेगा। और किस डिस्टेंस पे बनेगा? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द मिरर। ये जितनी डिस्टेंस इसकी है मिरर से ए की, उतनी डिस्टेंस इसकी रहेगी। बी पार्ट का आंसर, कैन पहली एट बी सी दिस इमेज, ये बी इस इमेज को देख सकती है, यस, पहली एट बी कैन सी दिस इमेज। आंसर ऑफ सी, यस, बुजो एट सी कैन सी दिस इमेज, बुजो भी इस इमेज को देख सकता है। नाउ डी आ रहा है, व्हेन पहली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव, ये बी सी पर आती है तो इस इमेज में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विल नॉट मूव, इट विल रिमेन एट द सेम पोजीशन व्हेन पहली मूव्स फ्रॉम बी टू सी। ओके, थैंक यू।